Students, hi, how are you? So in this video we'll be starting with the poem named The Last Bargain. It is a beautiful and meaningful poem. So let's begin. Before reading the poem, we'll be reading the lines given above, these lines. Let's see. So what is the meaning of bargain? वट डू यू मीन बाय बार्गेन? तो जो फर्स्ट लाइन है वो ये बता रही है कि वट इज़ द बार्गेन. अ बार्गेन इज़ एन अग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टी प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. इवन यू कैन से अ डील. ठीक है, कि अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप में जाओगे एंड समवन इज़ अ होलसेलर एंड समवन इज़ अ शॉपकीपर, तो होलसेलर एंड शॉपकीपर के बीच में जो भी एक्सचेंज होगा गुड्स का, जो भी वो खरीद रहा है या जो वो बेच रहा है, तो वो एक ऐसा एग्रीमेंट करेंगे, वो ऐसी डील करेंगे जिससे दोनों को प्रॉफिट हो. सिमिलरली बार्गेन मीन्स एन एग्रीमेंट विच बोथ द पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. तो बेसिकली तो मैंने आपको एक रेगुलर एग्जाम्पल बताया कि जिसमें उन दोनों को फ़ायदा आ रहा है, या फिर इसमें क्या है, समथिंग फॉर ईच अदर, कि अगर मैं आपकी अगर कोई हेल्प करूँगी तो इन रिटर्न यू विल ऑल्सो डू मी अ फेवर. लेट्स रीड फ्रॉम द बुक. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. So here in this poem we will be seeing there is a worker who is waiting so that someone could hire him. Hire him means कि वो वेट कर रहा था कि कोई उसको आके जॉब दे, या फिर कोई उस काम अगर वो करे तो उसके बदले में जिसके लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इन रिटर्न that person will give something. But he always think जी कि जितनी भी बार्गेन उसको इस पोएम में अपन देखेंगे, जितनी भी बार्गेन हुई हैं, तो वो क्या सोचता है उन बार्गेन्स के लिए कि इट इज़ वर्थलेस. वर्थलेस मीन नो यूज़, या कोई उसकी रियल वैल्यू नहीं होगी जो भी बार्गेन में उसको मिल रहा होगा. ही थिंक्स, द वर्कर थिंक्स इट इज़ वर्थलेस, और हिंदी में यू कैन से बेकार, कि अगर अपन को लगे कि यार ये तो बेकार है, सो ही रिफ्यूजेस. बट लेटर क्या लिखा है, फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. वट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट बार्गेन. सो जो लास्ट उसको बार्गेन मिली है, या जो उसने बार्गेन डिसाइड करी है, तो वो उसको क्या कर रही है, हैप्पी एज नेवर बिफोर. दैट वर्कर इज़ हैप्पी, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड. सो नाउ वी विल बी सीइंग कि वो ऐसी कौन सी बार्गेन है कि जो उसको वो बेस्ट बार्गेन लगे. सो नाउ in these lines what we get that the worker is finding job or waiting to get hired which will give him happiness, जैसे अपन ने लास्ट में देखा था. और यू कैन से ही वॉन्ट्स फ्रीडम. तो फ्रीडम हेयर फॉर वर्कर, वर्कर के लिए फ्रीडम क्या है, फ्रीडम मीन्स नो बाउंड्रीज, और यू कैन से नो रूल्स. ही जस्ट वॉन्टेड टू बी हैप्पी, कंटेंटेड. So now even we will be seeing that कि what the bargains he'll be getting and why he is not taking that bargain, why he is refusing, मना क्यों कर रहा है वो bargain का, उसका reason भी अपन देखेंगे. and it is very very important कि आप वो reason उसको याद रखो कि why he is not accepting the job, जहाँ पे अपन देखेंगे कि वो वेट कर रहा था जॉब के लिए, बट जैसे ही उसको बार्गेन लगा कि नो इट इज़ वर्थलेस, मीन्स नो यूज़ फॉर हिम, ही रिफ्यूजेस दैट जॉब. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ. कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. स्वॉर्ड इन द हैंड, किंग केम इन हिज चैरियट. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his
chariot. So here the worker, the man is saying, please someone hire me, please employ me, or you can say give me some work. So it is the scene of the morning कि वो morning में एक stone paved road पे जा रहा था, means a road made from stone, and there he saw a king coming in his chariot with the sword in the hand. So what is chariot? Chariot is two-wheeled a vehicle which is drawn by horses, और आपने जैसे कह लो हिंदी में रथ, कि ऐसा एक व्हीकल होता है जिसके आगे हॉर्स होते हैं और वो उसको पुल करते हैं. सो नाउ किंग केम टू दैट मैन एंड सेड टू दैट मैन दैट आई विल हायर यू, आई विल गिव यू वर्क, और यू गिव मी योर सर्विसेज एंड आई विल ऑफर यू माई पावर. तो यहाँ पे कौन सी बार्गेन हुई कि इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज ही इज ऑफरिंग power, the king is offering power. But here, see, here it is written, these lines are from the worker, कि वो worker अब क्या कह रहा है, but this power, his power counted for nothing and he went away. So now worker is saying कि जो king की power है, that means nothing to me. Counted for not means that आई काउंटेड पावर नथिंग, कि उसके लिए वो पावर कुछ नहीं है. एंड रीज़न वाई ही सेज कि पावर कुछ नहीं है, बिकॉज वन और द अनदर डे किंग विल डाई, सो पावर विल गो अवे. इवन ही इज सीइंग वांटिंग हैप्पीनेस. इन दीज अबव लाइन हेयर इट इज़ रिटन दैट ही इज़ हैप्पी. तो उसने लास्ट बार्गेन एक्सेप्ट करी, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि पावर इज़ नथिंग टू मी, आई काउंट पावर नथिंग बिकॉज इट वोंट गिव मी हैप्पीनेस. सो ही रिफ्यूजेज द किंग एंड द किंग वेंट अवे. वेंट अवे मीन्स वापस चला गया इन हिज चैरियट. सेकेंड पैराग्राफ. In the heat of midday, houses stood with the shut door. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coin one by one, but I turned away. So here wandered means roaming. So now the man is roaming. It is midday means around afternoon. All the houses he is describing are shut because it is lots of heat. But as I was roaming on a crooked lane, crooked lane means curved lane, not a straight lane, or you can say a path or a road, a curved path. There he saw a man with the bag of gold, and that man pondered. Pondered means think. He thought, and then he said to man that I will hire you with my money, that you give me your services, in return I will give you money. He weighed. Weighed means, weighed basically means वजन करना, but here it means कि जो वो man था, old man, he was showing coins one by one, कि see that I have money, in return you will give me your services or I will hire you. But I turned away. But I turned away, ये कौन कह रहा है? That worker. Means again he refuses this bargain and said that money won't give me the satisfaction, or money will of no use. Means might be उस वो मनी से वो हैप्पीनेस वो कह रहा है कि वो मैं नहीं ले सकता, वो मनी वो किस यूज़ में ले, एंड माइट भी वो यूज़ कर ले, बट दैट मनी इज़ नॉट गिविंग हैप्पीनेस, और यू कैन से कंटेंट थ्रू टू दैट मैन. सो ही रिफ्यूजेज ऑल्सो टू द ओल्ड मैन. नाउ थर्ड स्टैंजा. In the evening, the garden hedge was aflower. A fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. So now, in the evening, it is evening time, he saw a fair maid. Fair maid means a very, very beautiful girl.
standing, or you can say that came outside where there was a garden with hedge. Hedge means a barrier, but यहाँ पे barrier means एक flower का barrier है, तो उसके बाहर वो क्या देखता है, एक fair lady, और you can say a beautiful lady with fair means you can say gory and yet beautiful. So what she offers that man, that I will hire you with my smile, that I will employ you, give you work in return of my smile. But again that worker realized her smile is not something live forever. Live forever means कि वो हमेशा स्माइल उस गर्ल के पास नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस. जस्ट लाइक दैट कि अपन वी आर हैप्पी, ओके, वी आर ऑलवेज हैप्पी, बट इट इज़ नॉट दैट कि अपन हमेशा ही हैप्पी रहेंगे. समटाइम देर विल बी इमोशन ऑफ सैडनेस, समटाइम्स पर्सन इज क्राइंग. सो दैट इवन ही ऑल्सो रियलाइज कि हर ब्यूटी विल फेड अवे विद एज. फेड अवे मीन्स कि वो जो ब्यूटी है एज के साथ चली जाएगी. सो ये सब सुन के क्या हुआ, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. स्माइल पेल्ड मीन्स ये सब सुनते ही उसकी जो ब्यूटीफुल गर्ल की जो स्माइल थी दैट फेडेड अवे मीन्स वो भी चली गई थी. शी वॉज क्राइंग एंड शी ऑल्सो वेंट बैक बिकॉज दैट मैन रिफ्यूजेज हर बार्गेन. So last stanza, the sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with the shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforth that bargain struck in child's play made me a free man. So now it is a late evening when the sun sets. So it is the जो सीन अपन को बता रहे हैं वो है कि that the sun is glistened means shining. जो सन रेज हैं वो सैंड के ऊपर ऐसे पड़ रही थी कि जैसे वो सैंड शाइन कर रही हैं. एंड जो सी वेव्स थी दे वेव्स ब्रोक waywardly means the sea were ब्रेकिंग बाउंड्रीज वेवर्डली मीन्स अनप्रिडिक्टेबली, कि जो वेव्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं कि वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन वो ऐसा वो बता रहा है कि वो उसको फील हो रहा है कि वेव्स आर ऑल्सो ब्रेकिंग द बाउंड्रीज. तो यहाँ पे फ्रीडम एंड ब्रेकिंग द बाउंड्रीज को कैसे लिंक करेंगे कि फ्रीडम इज़ विदाउट द बाउंड्रीज मीन्स आप बाउंडेड ना हो, मीन्स आपके ऊपर कोई बाउंड्रीज ना हो. बट जितना भी अपन ने पहले जो देखा था मनी, द पावर एंड द ब्यूटी, तो वो सब क्या था, उन सब पे बाउंड्रीज थी कि पावर को आप गलत वे में यूज़ नहीं कर सकते, तो ये उसकी पावर की बाउंड्री थी. मनी कि आप उसको मनी को ऐसे ही यूज़ नहीं करोगे, गलत यूज़ में नहीं रहोगे या वेस्ट नहीं होंगे, तो मनी के ऊपर भी बाउंड्रीज थी. इवन जो ब्यूटी है उस पर बाउंड्रीज क्या है कि अगर आपने उसका केयर नहीं करा दैट ब्यूटी विल फेड अवे एंड डेफिनेटली विद एज तो वो फेड होगी. तो इट वॉज कमिंग ऑल दीज थिंग्स वर हैविंग बाउंड्रीज. बट जो अभी उसको फील हो रहा है कि जो सी वेव्स है दे वर फ्री. नाउ देयर ही सॉ अ स्मॉल चाइल्ड प्लेइंग विद द शेल्स. जैसे कि फर्स्ट अपन ने पोएम के यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे वो क्या हुआ कि वो पर्सन को इतना स्ट्राइक हुआ दैट स्मॉल किड प्लेइंग विद द शेल. सो व्हेन ही वाज ऑब्जर्विंग दैट स्मॉल चाइल्ड, तो चाइल्ड सेज दैट आई विल हायर यू विद नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी सर्विसेज लूँगा. और माइट बी दैट चाइल्ड इज आस्किंग हिम टू प्ले विद हिम, माइट बी सिट नियर हिम. सो दैट बार्गेन स्ट्रक्स हिम टू हिम व्हाट, वर्कर को ये वाली जो बार्गेन है ये पसंद आई. एंड वाई ही वॉज लाइकिंग, बिकॉज फर्स्ट ही सॉ सच अ ब्यूटिफुल सीन ऑफ सन एंड वेव्स. देन ही सेड दैट चाइल्ड सीम्स टू नो मी, कि उसको लगा कि जो लिंक है उस चाइल्ड से उसका दैट दे ऑलरेडी नो ईच अदर.
So in the last line it is written, from henceforward that bargain struck in child's play and made me free man. Henceforward means since that time. तो from since that time struck means उसको hit करी उसको, या you can say he liked it, and from there he felt that he is a free man. That pure innocence of child makes him happy and free man. He thought he can live freely with his freedom, because for that worker freedom, happiness was more than the power, the money and from the beauty. उसके लिए क्या चीज़ important थी? That freedom, that happiness. Even why the worker liked that bargain? Because the innocence थी, we can say जो मासूमियत थी बच्चे की, that उसने क्या कहा कि वो बच्चा कह रहा है कि आई विल हायर यू. लाइक वी जनरली सी कि अपन को वर्क पे कौन रखता है कि जिसके पास पैसा होता है, जिसको ज़रूरत होती है. बट जो चाइल्ड है वो कितना इनोसेंट था. दैट इनोसेंस ऑफ चाइल्ड touch the soul of that man, or you can say of that worker, and this made him a happy and makes him free man. So even at the end what we see, or you can say the theme of the poem, or what moral do we get from this beautiful poem, is that power, money, beauty are confining force. What is confining? Bounded. Earlier I have told you freedom means no boundaries, या जहाँ पे बाउंडेशंस ना हो. So but power, money, beauty are confining force, means they are bounded, and they can give you never a true happiness, or you can say they can never give you true freedom, because freedom is like no responsibility, nothing to care, only happiness, only life matters. So I think you enjoyed this poem and understood well. You can read these lines again one by one and understand the meaning of this beautiful poem. And it is again written by Rabindranath Tagore. All the poems of Rabindranath Tagore are beautiful with a great message. Thank you so much for listening. Stay well, take care.